The Rajasthan political crisis is far from ending. Instead, it is getting murkier every day. New details, new allegations are emerging. On Thursday, it was the three explosive audio tapes that heated up the already tense political environment in Rajasthan. Allegedly, these three clips that went viral on social media were leaked by the Gehlot camp. The clips come a day after Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot alleged that BJP is trying to topple his government by offering them money. Though he did not take Sachin Pilot's name, he said that the Rajasthan Pradesh Congress Committee chief was personally involved in the deal. Though Pilot rejected the claim, saying that he is not going to join the BJP and the link is being established only to harm his image in the eyes of the central leadership. Yesterday, Sachin Pilot moved to the Rajasthan High Court. He filed a plea against disqualification proceedings by Assembly Speaker against him and the MLAs supporting him. Their petition first came up before the court at about 3 p.m. yesterday, but the descendants, Advocate Harish Salve, sought time to file a fresh plea. At 5 p.m. yesterday, the dissident camp submitted an amended petition. Pilot's choice of lawyers, Harish Salve and Mukul Rohatgi, also raised many eyebrows. Congress leader Abhishek Manu Singhvi, on the other hand, is representing the Rajasthan Assembly Speaker, that is, Rajasthan government. The matter is being heard at present in the court. Meanwhile, the Congress in the morning press briefing announced that it is expelling two Congress leaders, Bhavar Lal Sharma and Vishwendra Singh, caught in the audio tape row from the primary membership of the party. Party spokesperson Randeep Singh Surjewala said that the audio tapes prove that BJP was indeed trying to buy the loyalty of Congress MLAs for Rs 25 to 35 crores. He also said that instead of fighting coronavirus, the BJP is engaged in gaining power. This was also done in Madhya Pradesh. कि वो लोग जो गुड़गांव के होटल में भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी और सुरक्षा चक्र में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री से तथा कथित तरीके से बातचीत कर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी। इसलिए हमारी मांग है कि नंबर 1, प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, श्री भंवर लाल शर्मा विधायक व श्री संजय जैन भाजपा नेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर बिंदु 1 की तर्ज पर कार्यवाही हो। नंबर 3, पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, वह ये सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया, हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर 4, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। नंबर 5, यह भी जांच हो कि इस ऑडियो में नामित व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और व्यक्ति या विधायक द्वारा सरकार गिराने या निष्ठा बदलने के एवज में पैसों का लेन देन हुआ है। श्री सचिन पायलट भी आगे आकर विधायकों की सूची भाजपा को देने बारे इस तथा कथित इल्जाम के बारे अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर से स्पष्ट करें। But what was in the audio tapes that has set the internet on fire and has stirred up the political pot in the state?
We will explain it all, but let me clarify that these are the audio tapes that are being widely shared on social media, and at HW News we don't vouch for the authenticity of the audio tapes. In fact, the authenticity of these audio tapes is now under investigation. Before going into the details of the tapes, listen to what these tapes say. हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ, तो आशीर्वाद दे दूँ। और बिल्कुल साहब, विजय भव, विजय भव। विजय बिल्कुल, आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल। हाँ साहब, मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जैसी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी। हाँ तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार रात तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी, जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं, बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात अलग होनी। हाँ, और संख्या बल है कोनी। संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी, संजय की वो मेरे विदेश में ना वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ, तो मैं वो तेरे लिया। ठीक हो कब? ठीक साहब, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। हेलो जी भाई। हाँ भाई। हाँ। सो ही इज गोइंग ऑन सेइंग दैट दोस पीपल, हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है श्रीनगर। वेल ठीक है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन दैट। यस, सो व्हेन डू यू सी यू टुमारो? या I'll see you early morning by 8. नहीं, आप आराम से आओ। अच्छा, आराम से आओ आप 11 बजे तक। नहीं, I'll have to come back also the same day, ना? नो, क्या हो गया? you have to do things here, ना? हाँ, We can't take it back. मैं आपको मिलता। आप कितने बजे उठ जाते हैं? मेरे को एक और काम भी है दिल्ली में। अच्छा, आपको 8 या 9 बजे मिल लेता हूँ, फिर मेरा हाँ। काम निपटा के जब आप बोलोगे कर लेंगे, फिर ठीक है, फोन पे काम। चलो, ठीक। ओके, But Bye. what I'm saying is that now we're moving legally. हाँ ठीक है। आपका एक्शन तो डिसाइड हो गया ना? कैसे? व्हाट लाइन यू आर टेकिंग? Yeah, I'm taking the line. यू आर स्टिकिंग विद देम, राइट? Yeah, or what else? हाँ ठीक है। चाइना का कुछ फोन नहीं आया वापस? नहीं आया। क्या मैंने ठीक है। किया उसको? ठीक है, ठीक है, I told him give me time to leave. चलो ठीक है, थैंक यू। कम ऑन। So after the expose of these audio tapes, the Gehlot camp is now saying that there indeed was horse trading going on, and not on a local level. Even the central minister Gajendra Singh Shekhawat was involved in this. Randeep Singh Surjewala, speaking to press outside Fairmont Hotel on Wednesday, had asked Sachin Pilot to come out of Haryana, which is ruled by the BJP, saying that he should free the Congress MLAs and break the BJP security ring. But these are not the only audio tapes with the Gehlot camp. Apparently, there are more audio tapes with them, and some of them, as stated by media reports, talk about bringing the Gehlot government in Rajasthan to its knees. Reportedly, Shekhawat was in touch with Bhavar Lal Sharma through a middleman identified as Sanjay Jain. Now, Bhavar Lal Sharma has a reputation of pulling a political coup. In the leaked audio tapes, Sharma is purportedly heard saying that the rebel camp will soon gather 30 MLAs in their support. As the audio clips started doing rounds on social media, MLA Bhavar Lal posted a tweet saying that fake audio clips have been released in his name. It is not my voice in these audio clips. I have not spoken to any leader, and this is a ploy to malign my name by releasing the fake audios. Now, this is what he said in his tweet. Meanwhile, a statement issued by supporters of Ashok Gehlot said that Bhavar Lal Sharma was making the 5th attempt to topple the government, this time with Sachin Pilot. As per some reports, Ashok Gehlot was aware of the alleged conspiracy being hatched to topple his government by Pilot camp MLAs. He had even sent these tapes to the party high command, report said. Meanwhile, Rajasthan Special Operation Group has filed a case against Union Minister Gajendra Singh Shekhawat.
Congress MLA Bhavarlal Sharma and BJP leader Sanjay Jain have also been named in it. An FIR was filed following a complaint by Congress Chief Whip Mahesh Joshi. Shekhawat clarified that the voice in the audio tape is not his. He said that he is ready for any kind of inquiry. At the same time, Rajasthan BJP President Satish Punia said that what is happening in the state's politics will be called shameful. He said, and I quote, "The Chief Minister's office is trying to tarnish the image of the leaders through the fake audio. The Union Minister is also being dragged into the matter." Meanwhile, the SOG team has reached Rajasthan High Court with a request to collect voice samples of the accused. That means it has sought permission to travel to Haryana's Manesar, where pilot camp MLAs are lodged in a 5-star hotel and take their voice samples to match it with the audio tapes. The matter in the divisional bench of the High Court has also been deferred till Monday. So we can expect more drama and more expose in the meantime. But one thing that we all must notice in this entire set of events is that the Congress party has yet not disowned Sachin Pilot. It has still kept its doors open for Pilot. Why is it that? Think about it and do let us know in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in. हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.